So, Biomutant has been, it's one of those, it's turning out to be one of those games where you really like it or you really hate it. Manas, on our last video, you kind of hated it in the beginning and then you loved it. So, what's your thoughts on that? Thoughts now? Yeah, मैं तो मतलब even after like being done with my review yesterday evening को I had uninstalled the game. ये सो क्योंकि I was getting ready कि ना next क्या करूँगा तो उसके लिए recording space वगैरह सब Because ready. Manas wanted to install Outrider, by the way. वैसे Outriders भी install किया, Anthem भी install किया. I wanted like to do अरे भाई. some comparisons and all, but then like later in the night, like when I wanted थोड़ा time relax करने, then I reinstalled Biomutant only. Because Oh. like it has some chill stuff, like once you're in the later second half of the game, like काफी chill है, like good views, chill out, explore, and like even after being done with the game and like 40 hours already खेल लिया था, like by the time the review video was out, 45 hours or something, and उसके बाद अभी I'm like 50 something hours in, and I'm still seeing like some areas जो मैंने पहले देखे ही नहीं थे, with which needs abilities and क्या बोलते हैं suits and power ups, specific things that you need to even get there. तो मुझे लगा like, dude, like this journey overall is kind of cool कि ना, like it has stuff to offer, new stuff to offer so far into the game, still for a game जो like made by a small studio ना. तो उसके रिव्यूज देख के थोड़ा तो लाइक आई जेन्युइनली थॉट आई वुड बी लाइक द मैं उस वीडियो में देवर पार्ट्स वेर जो मैंने रिव्यू किया था उसमें देवर पार्ट्स वेर आई वाज इवन हार्शर, बट वो सब मैंने हटा दिया यही सोच के कि यार साले आई विल गेट अ लॉट ऑफ हेट फॉर इट, लाइक जैसे सुशीमा में था ना, मैं कहा चल ये सब बोलना ही नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, लेट पीपल एंजॉय द गेम दैट दे वांट टू. बाद में देखा ड्यूड लाइक मेरा रिव्यू apart from the score is like more positive than most reviews out there, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग था. मुझे लगा लाइक स्पेशली जैसे आई मीन नॉट टू ब्लेम आईजीएन और गेम स्पॉट, बट गेम स्पॉट तब भी थोड़ा मुझे लगता है दे आर लिटिल हार्शर, बट आईजीएन थोड़ा सा और वैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, दे ट्राई टू बी मोर थोड़ा गेमर एंड लाइक मेन स्ट्रीम फ्रेंडली, लाइक यू नो एवरी कॉल ऑफ ड्यूटी इज एन 8 एटलीस्ट. काफ़ी सारे गेम्स उनका स्केल मोस्टली आई थिंक वेरी गोज फ्रॉम लाइक अ 5 to 10, लाइक नॉट अ 0 to 10 वाला स्केल तो है ही नहीं आईजीएन का. इट्स अनलेस की लाइक दे सी अ गेम ब्रेकिंग बग और समथिंग. साइबरपंक इफ इट कैन गेट अ 9 फिर तो क्या ही बोले. तो है ना, तो वो हालत. तो आई वाज सरप्राइज टू सी कि so many outlets giving such low score to that game. मुझे लग रहा है लाइक मेरा 6 is still a compliment could be, क्योंकि मैं तो genuinely trying कि उस रेंज पे देखता हूँ ना, लाइक अगर सुशीमा जितना मज़ा नहीं आया मुझे, बट आई एन्जॉयड इट लाइक सुशीमा जैसा, बट सुशीमा आई कैन टोटली अप्रिशिएट द पॉलिश. तो 7 था तो चलो मैंने फाइनली आई थॉट लाइक 6 मेक सेंस फॉर दिस, इट्स अ डैम गुड गेम, बट एवरी गुड थिंग आई से अबाउट इट कम्स विद अ कैविएट कि ना, लाइक इसमें ये वैसे है. मैं तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि जैसे व्हेन इट कम्स टू साइबर पंक, लाइक इट्स अ बिग पब्लिशर, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लॉट ऑफ व्यू आउटलेट्स, तो दे गिव इट, एंड उनको पता है कि मेन स्ट्रीम लाइक ऑडियंस का भी लाइक बैकलैश होगा अगर, लाइक विद गेम स्पॉट, लाइक दे नोबडी नाउ सेज एनीथिंग अबाउट दैट गेम स्पॉट का साइबरपंक रिव्यू. उस टाइम पे लोग इतना चीख चिल्ला रहे थे विदाउट हैविंग प्लेड द गेम, बट आफ्टर हैविंग प्लेड इट इट वाज अ 3 ऑन मेटाक्रिटिक फ्रॉम द यूजर्स, जबकि गेम स्पॉट गेव इट अ 7. तो इसी बट मोस्टली आउटलेट्स कहते नहीं है ना, लाइक विद दीज बिग पब्लिशर्स एंड बिग गेम्स दे नॉट एवर दैट क्रिटिकल. मुझे ऐसा लग रहा था कि इवन वहाँ उनके रिव्यूअर्स को भी एक आउटलेट मिल गया ना, दिस इज लाइक अ स्मॉलर पब्लिशर, कोई कुछ बोलेगा नहीं. ऑडियंस इज ऑनेस्टली एक्साइटेड फॉर द गेम. मुझे मेरा तो फीलिंग यही था कि पीपल लाइक इट, पीपल आर एक्साइटेड फॉर इट. मैं भी था वैसे, तो बट दिस फेल्ट लाइक कि ना, लाइक सबने मौका लेके बोला यार यहाँ पे अपनी पूरी भड़ास निकालेंगे जो बोल सकते हैं. टी एच क्यू नॉटिक क्या करेगा अभी तो, इवन द एम्ब्रेसर ग्रुप माइट दे कम आफ्टर देम इवेंचुअली, बट दैट्स व्हाट आई फेल्ट. एंड मुझे एक चीज़ जेन्युइनली लगा, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कल ना, मुझे लगा ड्यूड बायोम्यूटेंट का आई थिंक देयर बिगेस्ट डिसएडवांटेज वाज कि ना दे हैड अ मार्केटिंग बजट. अगर उनके पास मार्केटिंग बजट नहीं होता ना, people like, and they had not put out so many things and trailers and stuff out for the game, which honestly good on them. नहीं एक्चुअली जस्ट द ट्रेलर्स आर, तो यार जैसे अनकट गेम प्ले फुटेज वगैरह तो ऐसे डाल सकते थे, उसके लिए मार्केटिंग बजट छोड़ना चाहिए. बट ऑल द मार्केटिंग दैट दे डिड, लाइक प्यूडीपाई एंड ऑल, लाइक हाइपिंग अप द गेम लाइक दैट, है ना, लाइक प्यूडीपाई वाज स्ट्रीमिंग द गेम लाइक 5-6 days ago बिफोर रिलीज. तो वैसे सब ना, लाइक दे मस्ट हैव डेफिनेटली हैड अ बजट.
वो सब लाइक सेट लाइक टू हाई एक्सपेक्टेशंस. वो सब देख के लाइक इफ यू थिंक कि ना अगर कोई कंपनी प्यूडीपाई को अर्ली एक्सेस दे रहा है एक्सक्लूसिवली टू स्ट्रीम, तो यू वुड इमेजिन ड्यूट लाइक दिस लाइक अ हाईली एंटिसिपेटेड गेम, द बिगेस्ट यूट्यूबर इन द वर्ल्ड इज. तो वैसे सारे एक्सपेक्टेशंस भी सेट हो रहे हैं. लाइक अ लॉट ऑफ द ट्रेलर्स मैंने पहले ही बोला था, देख के लग रहा दे लुक मच शार्पर देन द गेम डज, इवन तो ऐसा नहीं कि गेम लुक्स बैड, बट ट्रेलर्स में यू कैन सी लाइक इट्स प्रेजेंटेड मोर सिनेमैटिकली. कुछ कुछ ट्रेलर्स तो मैंने देखे उसमें जो है वो तो गेम में है ही नहीं. लाइक आई मीन दोस आर लाइक टू अर्ली वाले ट्रेलर्स. तो वो गेम जैसे द पार्ट वेयर एक ट्रेलर था जो विच इज बीइंग रेफरेंस्ड नाउ लाइक इन अ लॉट ऑफ रिव्यूज कि ना वेयर द कैरेक्टर वाइल फाइटिंग इज जंपिंग ऑफ एनिमीज, यू सी दैट एनिमी हैट्स. वो वैसा मैंने देखा ही नहीं है गेम में. तो वो सारा देख के मुझे थोड़ा लगा कि ना लाइक इफ दे हैडंट हैड दिस काइंड ऑफ बजट फॉर मार्केटिंग, so even people would have sat through like the slow ass intro just to get to the वो. और also game के major issues are not missing features कि ना like जो ये चीज़ मैंने like when I was talking about एक घंटे जब last time बात किया तो मैंने ये नहीं बोला यार ये missing है इस गेम में. The problem was कि the things they added on top of everything there was, है ना, like one of the few games जहाँ पे more features kind of ruin या more time spent on like particular thing kind of ruin the वो वैसा वाला. वो सारा देख के लाइक माई थॉट वॉज कि दिस इज नॉट अ बैड गेम, लाइक नॉट अ बैड गेम, नॉट डेवलपर्स लाइक बैड डेवलपर्स या बैड इंटेंशंस, कुछ नहीं. लाइक दे जेन्युइनली अ लॉट ऑफ थिंग्स. इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था वी शुड डू अ वीडियो मैन लाइक इन डिफेंस ऑफ बायोम्यूटेंट. लाइक देर आर स्मॉल थिंग्स अबाउट दैट गेम दैट मोस्ट स्टूडियोज डोंट इवन. जैसे ये भी दिस इज अनदर थिंग जो मैंने आफ्टर बीइंग डन विद रिव्यू आई नोटिस्ड. जैसे यू टेक आउट योर बोट एंड यू स्टार्ट गोइंग अराउंड ऑन वाटर. तो वैसे तो व्हेन आई वाज ऑन अ बोट इनिशियली आई थिंक मे बी रिव्यू वाले अर्ली एक्सेस वाले वर्जन में आई डोंट नो व्हाट इट वाज कि ना लाइक ऑन वाटर देयर आर दीज ट्रैश स्टफ टू कलेक्ट. अभी जब मैं खेल रहा हूँ तो आई फाउंड लाइक पानी पे ना देयर स्टफ फ्लोटिंग अराउंड, यू कैन कलेक्ट दैट. बट ऐसा नहीं कि जैसे सुशीमा वगैरह में है ना कि यू जस्ट प्रेस अ बटन टू इमीडिएटली यू लाइक वेर एवर इट्स वहाँ से गायब होकर गोज इन टू इन्वेंट्री. वैसा नहीं है. इफ़ यू आर ऑन अ बोट एंड यू पिक समथिंग तो द गाई एक छोटा सा मैकेनिज्म निकल के आता फ्रॉम द बोट लाइक a stick comes out with a net at the end. वो net अंदर जाता है पानी के, picks it up and then the net it the sticks and folds back and the net goes back in. वो छोटा सा डिटेल भी ऐड किया फॉर लाइक नो रियल लाइक उस पर टाइम स्पेंड किया. लाइक समटाइम्स पीपल विल गेट अनॉयड कि ये क्यों है, इवन तो पानी पे इतना चीज़ है नहीं कलेक्ट करने के लिए, इट्स नॉट रियली अ टाइम वेस्ट, बट दे एट दी स्मॉल टचेस. लाइक ऐसा लग रहा है एवरीथिंग दैट दे डिड द डेवलपर्स थॉट अबाउट इट. मे बी दे शुड नॉट हैव थॉट अबाउट ऑल ऑफ इट. इतना सोचना नहीं चाहिए था विद सम थिंग्स, बट दे डिड लाइक, है ना, लाइक मूवमेंट. तो उससे मुझे लगा कि लाइक स्टीम पे मैं देखा फक मैन लाइक इट्स मोस्टली नेगेटिव. मैं कह रहे यार लाइक पीपल आर रियली लाइक बम्ड अबाउट द स्टार्टिंग मस्ट बी हिटिंग देम हार्ड. So, but what did you think? Like seeing all the review scores and all, and like I mean, I'm not sure if you played it yet. I Yeah, started I'm playing not. it. Yeah, okay. Oh, Sushil playing. Yeah, Okay. let's go. Let's I Sushil started go playing first it a because he's little played it. bit, like half an hour, 45 minutes into it, and yeah, it's getting through a lot of tutorial, lot of like bounded areas and stuff like that, and it's quite all right for me right now because I've already got an idea from Manas, Orko, and Jay playing, so little bit of idea is there that I have to bear through this. But yeah, I do understand that regarding reviews, be it like video games, be it movies, I even though in the end, at the end of the day, we have to give it a number because that's what many people, like quite a big chunk of our audience expect a number. But it's quite difficult. It's quite hard, and sometimes what we can't express is that it's very subjective. That a 7 for me is not equivalent to a 7 for Manas. Like the values are quite different. The things that we expect, like I'll even play like a 6 game or a Yeah. 5 game. Yeah, but some people would not. And it just depends on that. And some games might do really well on one part and not very well on certain other things. Yeah. And if you like that one thing, if you like only story, of something, then you might slog through a game because you like the story. Yeah. The gameplay might not be that complex and everything, and it's just those things are very difficult to wrap up into one singular number. And हाँ. I feel that's the difficulty of just assigning numbers for people's pleasure. कि ना लाइक कभी कभी दीज आउटलेट्स ना लाइक दे ब्रेक डाउन लाइक गेम प्ले इतना
ग्राफिक्स इतना, ऑडियो इतना, Right. लाइक आई थिंक दैट ऑल्सो काइंड हेल्प्स. एक ओवरऑल स्कोर मुझे ये जरूर फील होता है कि लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट रिव्यू स्कोर्स. क्योंकि कभी कभी होता है ना, जैसे हे नोबडी, स्पेशली लाइक इन दिस एनवायरनमेंट व्हेन सो मेनी गेम्स आर कमिंग आउट, पीपल आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, सोशल मीडिया, सो मेनी इनपुट्स. तो द फास्टेस्ट वे टू अब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज यूजफुल. कभी कभी कॉन्टेक्स्ट एंड न्यूआंस मिस हो जाता है उसमें, बट अ नंबर ऑलवेज हेल्प्स टू गेट अ एवरेज आइडिया. बट जैसे मुझे लगता है कभी कभी लाइक विद रिव्यू आउटलेट्स ऑल्सो यू नीड टू नो कि ना इन आउटलेट्स का स्टाइल क्या है. जैसे समबडी लाइक IGN विल यूजुअली रेंज बिटवीन अ 5 टू अ 10, तो उनका 6 माइट बी क्वाइट बैड. उनका 6 मीन्स कि इट्स लाइक अ 2 और 3 आउट ऑफ वाला वैसे गेम. Right. एंड उनका 8 ऑल्सो मे नॉट मीन मच. उनका 8 कुड एक्चुअली बी लाइक अ रियलिस्टिक लाइक अ 6 ऑन अ नॉर्मल 0 to 10 वाले स्केल में कुड एक्चुअली बी अ 7 और वो. एंड ऑल्सो यू राइट, लाइक आई प्लेड लाइक गेम्स जैसे इलेक्स comes to mind. That was a game that was trashed at launch for being quite bad, and I remember being kind of blown away because of the things it actually did right. जैसे Elix एक game था, it's like a very good role playing game. I think when it comes to role playing, even visuals, visual variety में of course उतना अच्छा नहीं है. It almost has like a Horizon Zero Dawn वाला look. Elix and role playing है तो much better than Witcher 3 even. कि ना Right. जैसे you would start, it's a world जहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह अजीब से वे में मिक्सड है. लाइक टेक्नोलॉजी इज हेटेड बाय सम पीपल, लव्ड बाय सम पीपल. तो इफ यू गो टू अ क्लैन and which is against technology, you even pull out your tablet जिसमें you track quests and everything, or you pull out a weapon गलती से, they'll get mad at you. You can't look at your quests and everything like properly, like using pull outing your tablet and everything. You have to go out and do that. तो वो सारा, but हर गेम में वैसा नहीं है. there are janky stuff in that game, so 6 for that game makes sense. बट जो वो ध्यान देना है कि दैट 0 to 6 में जो फन है, दैट्स अ लॉट ऑफ गुड स्टफ वाला रेंज है. जो प्रॉब्लम है दैट समवेयर एल्स वाला. वैसे आयुष, व्हाट डू यू थिंक? लाइक Like, यू रन अ वेबसाइट जिस पे रिव्यू पे स्कोर्स डालते हैं, तो व्हाट डू यू हैव टू से फॉर योरसेल्फ? I think I back every score that any one of on my site gives to any game. So I back everything. So I think it has to be like what I have felt myself doing is like when I had more time in my life, I used to go to three. I used to prefer written reviews over video reviews. ओके. Now I prefer video reviews. In fact, I now prefer TLDR options now. So I can ओके. see ओके. the value of like cards or like just like a paragraph to understand what kind of game that is. या. And in fact, in my opinion, scores like Metacritic and like Rotten Tomatoes, which average out a score across platforms, is not the best, like estimate of a game or a movie per se, because like Sushi said, it's a review is very subjective, and mixing all those subjective scores to create an average score is not the right thing to go for. What I will say is like, given the sample size is so big, it kind of works out for towards the end, because like right now Metacritic score for Biomutant is 67 for the PC, so it's pretty low. But there are scores which is by GameSpace is a 95, the Game Revolution, Gaming Bible is a 90. So there are multiple 90 scores or 100 scores there as well. And even though even because of, even in spite of that, it's a 67. So in my opinion, something I think you should find like people that your tastes align with. So for example, like you like a game, you know that you like this game, go and read a review for that on GameSpot, on that site, and see who has given that game a positive review and has mentioned the things as he liked what you liked about the game. So from that point, you will be able to understand, okay, this reviewer kind of thinks like me. So when he reviews a game, he will probably mostly talk about the things that I care about in a video game. या. If you have two to three reviews like that, I think you should be good to go. So there are like it's not there is no dearth of options out there right now. There are hundreds of websites out there. It's up to you to find that. But if you want to depend on a Metascore, it's up to you. It's like looking at Steam reviews. It's the same old thing, but you need to make that effort. You need to take that time. या. Um, about games that you like and try to play through because you like one thing, I would like to say The Witcher 2 had really bad game mechanics.
Yeah, like yeah, outright objectively game bad game mechanics, but lots of people played through that entire thing, called it a masterpiece just because they liked the story and yeah, how Right. it was made, you know. So so there is that. For biomutant, I think like from what I've read, specifically about biomutant, from what I've read and what I've seen, I think people tended to like all the points that you pointed out, like one about those outputs being repetitive and being a big part of the game initially. Again, like not having the difference between choosing to save the tree of life and not choosing to save the tree of life, not being too much different gameplay wise and story wise, and like having to collect all these things. Like there is a big focus on collecting things. For I think one of the reviews mentioned that you have to collect a certain number of animals to go for a big world eater boss that you have, right? So those things are, those things are, what do you say, like tedious for people, and like and I think like from I understand Manas's point also about like I think one thing is like that the developers wanted to make this a triple A double A game, and if you remove all the things that people hate about it or have not liked about it, these are games you normally associate with a triple A game. You know, mechanics that you associate with triple A games, like lots of collectibles, some outposts that you have to defend or take over. So just like it added padding to that gameplay, and I don't know why they thought that was necessary, but the core gameplay that Manas talked about, everybody has mostly liked. When you yeah, get into that open world, you're trying, you have like basically teenage mutant ninja wombat, you know, whatever you want to call that cat or what, and he's doing Kung Fu Panda stuff in the middle. Or you know, a Horizon Zero Dawn with animals, furries. That's how someone is called it. So that's pretty good praise for a video game, you know. And I think if they had removed all that part stuff and kept it core down to that element, I think it would have done better. yeah, The point about marketing, you know, I would have to say, like, we off air we were discussing Outriders and how it has done so well in spite of not getting the critical reception that it wants. yeah, So it sold around $2.7 million or 2.7 million copies, right? If Biomutant is able to sell that number, it will be probably be because of the marketing budget, irrespective of the bad and the good reviews, right? yeah, And like Outrider was outright banned by the critics, and still it sold that amount of Right. copies because of the marketing. So I think the at the end of the day, developers also need to make money, and if that marketing thing helps them out to sell 1 million, 2 million copies, I think, you know, it's always good to have that. yeah. बट Yeah, and I मुझे feel लग रहा है द प्रॉब्लम yeah, विद बायोम्यूटेंट इज कि ना उसका इंट्रो इतना लाइक वो है ना लाइक वियर्ड लाइक जस्ट हैवी स्लोस द पेसिंग डाउन टू मच Yeah. टेक्स द कंट्रोल अवे लाइक जैसे यू वॉकिंग एंड यू ओ शिट ये अच्छा लग रहा है तभी कैमरा विल ऑटोमेटिकली टेक कंट्रोल अवे पैन यहाँ को लाइक टू दिस साइड जैसे यहाँ पे हम पत्थर पड़ा उस पे देखो लुक एट द स्टोन Mhm. नो स्टोन अनटर्न्ड वाला डायलॉग शुरू हो जाएगा तो मैं कह रहे ड्यूड लाइक आई वाज लुक who cares about that stone man what the fuck like I had told ye conversation wala I had like told you na and, some people had seen somebody like messaged me Alex after playing the game dude you were not Mhm. kidding about the conversation like I got mad like circle में जाते जाते रहे it's genuinely that मैंने तो कल परसों एक और नया ऑप्शन देखा इस कन्वर्सेशन में ना क्या था कि वेयर इज द सीक्रेट टू लाइफ ये था वन Mhm. ऑफ द वेयर इज इट मैं कह रहे Where साले is तू it? चुप एनीवेज सुशी वाज सेइंग समथिंग yeah. So I I watched thought the answer was 30. What is it? 42. 42? Yeah. 42 So I feel talking bouncing on that marketing thing, and then about six and sevens and stuff like that. I just wanted to say that something like Assassin's Creed One, like was a six or a seven, and like had a kind of okayish marketing budget. uh, Gameplay was a little tedious at parts. People don't run at me, which folks at parts it was No, no, not it was like it was not the like behemoth that Assassin's Creed turned out to be later on, especially with part two, getting bigger and better. So I feel that something like Biomutant, a step like this by Experiment, 101, is something like Assassin's Creed Part One, is something a sign of better times.
that the next time that they're going to do something, they're going to refine, they're going to make it better, they're going to work on all those things. And that's how I feel. So if I agree. Assassin's Creed 1 was not, was panned, and they didn't go for a sequel, we would not have these bevy of, like, so many really good games that came out 34 in the past. games And movies and TV series and and movies everything. and animations, Yeah, because in the end, Biomutant might make into like good lore, and franchises, yeah, good 67 franchises, games. somewhere like a Kung Fu Manda movie, and it Uh, will be plushies and everything everywhere. So just wait Biomutant hard. Valhalla. And now that you mention like Sanskrit में इतना तो I have to say man like जो combat है इसमें in Biomutant way more fun than Valhalla. Like a triple A studio like Ubisoft could not manage what these 20 people managed with the combat. The उन्होंने Valhalla में they removed like these massive number of weapons and all क्योंकि they could not figure out ना कि like weapons में like you getting in Odyssey Origins में you getting weapon after weapon meaning they Ubisoft sometimes ऐसा लग रहा है कोई दिमाग ही नहीं है उनके पास. वो डेस्टिनी से देखा कि लूटर शूटर चल रहा है तो चलो हम भी ना 100-200 वेपन डाल देते हैं. देन 2 बारी गालियां सुनी वैला उसमें ऑडिसी एंड ओरिजिन्स पे तो वैलहला में से हटा दिया. बोला कि वील हैव लाइक स्पेशल मूवमेंट्स ऑफ वेपन्स. बायोम्यूटेंट एटलीस्ट व्हाट दे डू दे approach it with ideas and confidence कि ना there is a large variety of weapons in Biomutant but I was excited to try almost all of them like हमेशा मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था just to figuring it out and Valhalla कम आस पास भी नहीं है and sometimes even the exploration that I enjoyed in Biomutant of course Valhalla has a bigger budget and more art and so they can go deep like ओवरवर्ल्ड है जो ऊपर का वर्ल्ड है बट इन द अंडरग्राउंड सेक्शन ऑफ कैन लाइक आई सेड ना एवरी केव यू गो इनटू वैलाला एवरी कॉर्नर यू टर्न देयर इज अनदर कॉर्नर टू टर्न आफ्टर दैट तो वो है उसमें बायोम्यूटेंट में वो नहीं था बट ऊपर ऊपर से जो ब्यूटी है वो काइंड ऑफ कंपेरेबल वैलहला से तो आई मीन दैट्स बिग प्रेज फॉर अ 20% टीम. Also, small note there, Valhalla currently has over, I think, $600 worth of armored microtransactions, where ओ unique भाई armor साहब. sets, which are not present in the base game, the deluxe edition, or the ultimate version. So even if you are paying from $60 to $100, you are not getting access to that. You have to spend close to $600 plus in order to get those armor sets. So, that's not a thing that I would want some other games to go for. Yeah. It's problematic, man. Like that decision is so like I'm playing Valhalla right now, and I get like I understood all that Manas was talking about that game when we were talking about the game of the review and like the review session. Like it's such a big game that's been part of our discussion ever since Manas played it. Like that's how Right. influential or that how good that game is. So sometimes these kind of decisions are like in loggerheads with each other. Like Valhalla is a game that I can return to even after I played. Like I came back to the game uh, and in between I finished Outriders and Returnal, and I Yeah. came back to that Yeah. and I felt I have not skipped a beat. Like I didn't have to go Yeah. back into training mode at all. Like kuch bhi nahi karna pada. And like that weapon thing also, I think I get it because like after like 4 or 5 days of playing with the same hammer, I felt like I have not changed my weapons for a long time. Yeah. And like, am I doing something wrong? Am I doing something wrong that I'm not getting an upgraded weapon? Because I'm so used to this looter shooter mentality, right? Like Yeah. getting a better gun in like every 2 hours, 3 hours. But that kind of sets you up for that like game mechanical stuff. So you in your mind you kind of because you've worked with a weapon for so long, you kind of in that mode where you are used to using that weapon, Yeah. so you kind of anticipate the moves and all that stuff. So I actually like for me now that Manas says that was a actual game design decision, it elevates Valhalla for me a little bit more for Okay. making that happen. But I get what Manas is saying. Like adding game variety, adding weapon variety is the taste of the season these days. And if a game like Biomutant is doing it well, then I think like it's high praise for Yeah. that kind of a game. And I am on board with Sushir on this. I think like in the last year or so, like the example with Assassin's Creed is like on point. Like that game was janky, but it had potential. And like when Assassin's Creed 2 came out, it just blew everything else out of the water. Like Hmm. they had improved upon every aspect of that game, and they had cut out parts which were not as good. So
we would expect the same from Biomutant as well. If this goes along, and for that it has to be a little bit more successful. Yeah. I would have hoped the same thing would happen with Days Gone, but it didn't. There's also a game called Order 1886, which Oh, never got a sequel. But it didn't do so. It didn't do so well, so we don't talk about it at the PlayStation Studios, at the PS4 fan club. बट वैसे ये डेज गॉन से मुझे याद है yesterday I was playing a little bit of डेज गॉन पीसी पे तो एंड मुझे एक चीज़ ज़रूर लगा कि यार डेज गॉन है कि इट डजेंट लाइक वेस्ट योर टाइम अलॉट इन द इंट्रो बट ऑल्सो लाइक आई प्लेड डेज गॉन लाइक अराउंड मुझे उतना ऐसा लग रहा था कि आई वॉज वेन इट लाइक इवन वेन द गेम लेट्स यू ओपन या फ्री थोड़ा इट इज़ नॉट एज एक्साइटिंग एज I was in Biomutant. Like once the game let me, it was more Did you run exciting. into a hole with Manas? Like, Uh, when did you run into a? nothing, नहीं, nothing too massive. PlayStation ऐसा खेला है क्या? हाँ Have हाँ you played on the PlayStation पे तो PS? खेला है yeah, there I've run And into hordes and all तो वो लेकिन I even think then थोड़ा PlayStation sorry में go. मुझे लग रहा है I always felt कि it's like another one of those Sony वाले game जिसमें बहुत weight है in the movement and animation but it's not really like a great shooter or anything like fun है no doubt but Hmm. I think Days Gone की ना there were a few things that I liked in Days Gone. उसमें क्या था कि you have these threads जो कि different all these threads which have their different stories but are kind of interconnected and you can follow through them. तो वो काफी clearly that design or choice around how your narratives should be designed, how your quests should be designed, and how they should be blocking each other or yeah overlapping each other. I like that idea. Plus the वो zombies वाला जो part था, मतलब it's not something that you see as a every day when you have 100 zombies running behind yeah you. yeah ठीक है. So I think Days Gone में they had that all of those things well put out and some new ideas. And I think वो अगर sequel में भी जाता तो they would have just improved upon all of them, yeah given the support from and वही वाली बात है. I think if you go to the Steam reviews right now for Days Gone, you will see that people like it, but the critics don't, because it's an right, amalgamation of different ideas, which is not perfect at any point, but it's doable and likable yeah right, as her point. Yep. So as but let's get back to Biomutant for a while. So that Kung Fu Panda Mutant Ninja Thriller, I think it has potential. Hopefully, it gets a sequel. right. For the people who are watching this, don't fall for the Metacritic score. Go onto a site where you trust. Check the score out there, and yeah play it for yourself. and एक और चीज़ Trust that score. I just want to mention this like you mentioned Outriders ना Outriders का भी जो marketing मुझे बस एक चीज़ लगा जैसे Outriders में I kind of hated Outriders का marketing like when they're saying ना like it's a looter shooter but no live service no micro transaction मैं कहा ये सब तुम्हें feature जैसे list क्यों करना पड़ रहा है what is good about your game like है ना what do will I actually be जब मैं खेल रहा हूँ मैं ये सोच रहा हूँ यार अभी मुझे स्टोर पे क्लिक करके माइक्रो ट्रांस लाइक व्हाट एम आई एंजॉइंग व्हेन आई एम प्लेइंग योर डैम गेम बायोम्यूटेंट वाले पीपल दे only talked about that like what they actually did what they didn't do उसको लेके backing off that like वो नहीं कर रहे थे वो जैसे even I hated when Witcher 3 was like कि we are giving away free DLC क्या है DLC just a different hairstyle मैं कह रहे चुप करो ना यार dude like that's तुम्हें गेम में डिफॉल्ट में डाल देना चाहिए था okay just but ठीक है enjoy the goodwill by giving it out for free but it's not a big deal it's a good thing only because Skyrim did it wrong या ओब्लिवियन में देयर वाज द हॉर्स आर्मर नहीं तो फिर इट्स नथिंग यू बेसिकली व्हाट यू सेइंग इज कि ना उसने गलती करी इसीलिए मैं सही हूँ क्योंकि मैंने वो गलती नहीं करी नॉट कि मैंने कुछ अच्छा किया विच आई काइंड ऑफ रियली डिसलाइक्ड अबाउट आउटराइडर्स का मार्केटिंग ऑल्सो कि ना बायोम्यूटेंट में आई थिंक द वर्स्ट मिस्टेक दैट दे डिड वाज कि इन वन ऑफ द ट्रेलर्स दे सेड कि वन ऑफ आवर प्ले टेस्टर्स कंपेयर्ड सम ऑफ द फीडबैक वी गॉट इज कि थोड़ा जेल्डा जैसा है and it's a edited video तो they could have chosen not to add that but they did kind of implying कि थोड़ा जेल्डा वाला फील वगैरह है बट like I said वो फिंगर गन मैंने मेंशन किया ना कि लाइक है ना स्टफ दे थॉट ऑफ समथिंग कूल एंड देन दे डिसाइडेड ओके इफ वी कैन मेक दिस हैपन वील मेक इट हैपन Right. है ना नॉट कि ओ व्हाट्स कूल हमारे गेम में माइक्रो ट्रांजैक्शन नहीं है लाइक हु गिव्स अ शिट ड्यूड लाइक मैं आई प्लेड एंटायरिटी ऑफ वैलहल्ला एंड थॉट कि लाइक यूबीसॉफ्ट कैन गो फक इटसेल्फ विद दैट फ्लेमिंग सॉर्ड जो उनके स्टोर में पड़ा हुआ है क्योंकि ड्यूड आई नेवर नीडेड इट है क्यों डाला हुआ है वहाँ पे तो है ना लाइक वैसे फालतू चीज़ें वो थोड़ा मुझे लगा लाइक उन सब चीज़ों को देख के मुझे जेन्युइनली थोड़ा बुरा लग रहा था कि
bad for the developers ki na, like But like this like practice of formation or like um, marketing of formation omitted feature is the entire was the entire bedrock of Sony's E3 conference when they launched the PS4 Right, right, right. around digital contents, right? So हाँ वो भी है but at least they try and to add that worked a out very joke. well for them. Yeah, maybe that's true also. Maybe that's why also Outriders had like such वो ना like Outriders में भी problems थे, launch में इतने issues थे, but Outriders never got as panned as जैसे Biomutant की जो like मैं ये कह रहा हूँ, मुझे लगता है जो चाहे क्रिटिक्स जो भी बोले, फाइनली इट्स द जो लाइक जो लोग खरीद रहे हैं, खेल रहे हैं ऑन अ डेली डे टू डे बेसिस, द मुझे द कैजुअल एवरेज गेमर इज हु काइंड ऑफ डिफाइंस उस गेम का रियल सक्सेस, लाइक क्योंकि डेज गॉन But you have to understand ना मानस वाले कि जैसे like that casual gamer जो है जो खरीद रहा है game, he cannot buy every game and see हाँ if he likes that game or या not. फॉर श्योर So फॉर that is why the reviews exist, श्योर, वो आई so एग्री. that he can get a informational point of view that should I try this game or या not. नहीं So नहीं वो तो इसके आई लिए एग्री. that's why the reviews exist ऐसा. हाँ नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिव्यूज होने नहीं चाहिए यार, मतलब मैं खुद भी रिव्यूज बनाता हूँ. नहीं माई पॉइंट वाज कि ना जैसे मतलब जैसे जैसे मैड दुकान जानी मैक्स पड़ेगी. जैसे मैड मैक्स है ना, मैड मैक्स व्हेन इट केम आउट इट वाज क्वाइट हेटेड बाय, एंड आई totally I think Mad Max is like the definition of mediocrity, but how many of us are like exceptional man, like हम सब कितने लोग है ना, 90% 80% of our lives are pretty mediocre, so what's wrong in mediocrity, like वो उतना ही है, Mad Max वही करता है, तो क्या क्या बोले अब. He can't start flying around all of a sudden like Superman and become exceptional, नहीं तो वो it's a 6 out of 10 game, but वो लोग ये भूल But जाते हैं कि just saying, like Mad Max in the latest movie, Mad Max was not even the central character of his own ओ movie. या So एग्जैक्टली वो है ना. he's not that interesting. या लेकिन दैट वर्ड लाइक मुझे लगता है व्हेन यू सी ए 5 और 6 आउट ऑफ 10 वाला गेम, थिंक कि वो 0 to 6 में क्या चल रहा है, नॉट कि वो 6 to 10 के बीच में क्या छूट गया. ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट ये है ना व्हाट्सअप, क्योंकि यार 2 या 3 मिले तो एक ही लाइक दिस लाइक ए बगी ब्रोकन मेस, तो छोड़ो चलो उसमें तो 0 to 2 में कौन काउंट कर रहा है कितना क्या है, बट है ना 0 to 6 एंड ऑल लाइक इट्स समवेयर लाइक पीपल कैन फाइंड अ गुड बैलेंस एंड होपफुली फाइंड समथिंग दैट दे एंजॉय.